Okay, in this video, we are going to discuss the cos rule. So yeah, before watching this video, I would recommend that you watch the previous videos on trigonometry, where I have covered the basics of trigonometry and the sine rule as well. Because after this video, we're going to do the past paper questions related to sine rule and cos rule combined. Okay, let's start. Now, why do we use the cos rule? Cos rule is used to find the angle or the side of a triangle. ठीक है, तो हम लोग या तो साइड निकाल सकते हैं या तो एंगल निकाल सकते हैं by using the cos rule. Okay, so let's suppose if I want to know the side, if I want to know the side of a triangle, if I want to know the side, I should know the angle opposite to it, and I should also know the adjacent sides of that angle. ठीक है, if I have to apply the cos rule. So, तो फिर अगर मैं अननोन साइड निकालना चाह रहा हूँ, so I'll be making use of this formula a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a. Now what are these a, b, c and this a? ठीक है, now this a is the unknown side that I have to find. ठीक है, and this capital A would be the angle opposite to this unknown side. Okay, what are b's and c's? B's and c's are the adjacent sides of the same angle. The angle which was opposite to the unknown side, उसी की adjacent sides जो होंगी मेरी, वो B और C होंगी. ठीक है, now let's talk about the unknown angle. जब unknown angle हो तो cos rule कैसे apply करते हैं? If I have an unknown angle, let's suppose x over here, and if I have to apply the cos rule apply करने के लिए I should know all the sides of the triangle. यानी अगर मुझे सारी sides triangle की पता है, only then I'll be able to apply the cos rule. Otherwise, I won't be able to apply the cos rule to find the angle. ठीक है भाई, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? cos a equals to b square plus c square minus a square over 2bc. अगेन व्हाट आर b c a? b c a क्या होते हैं? b और c अगेन हमारी एडजेसेंट साइड होती है ऑफ द एंगल. ठीक है, and what is a? The small a is the side opposite to my unknown angle. So yeah. अच्छा, अब फिगर आउट कैसे करेंगे कि भाई cos rule लगाना है कि sin rule लगाना है? ये फिगर आउट करने के लिए अगर आपको कोई भी अननोन साइड है, अननोन साइड का के ऑपोजिट एंगल गिवन है, ठीक है, और उस ऑपोजिट एंगल की एडजेसेंट साइड्स नोन है, तो यू कैन अप्लाई द cos rule टू फाइंड द अननोन साइड. अननोन एंगल निकालना है, अननोन एंगल निकालने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको तीनों साइड नोन होना जरूरी है टू अप्लाई द cos rule. Now let's do a few questions. Okay, over here it's the same question, that's the one on top. I have to find this x. ठीक है, so I'll make use of the formula. Since I have to find the side, I'll make use of the formula a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a. ठीक है, तो मेरे पास a क्या हो जाएगा? a is my unknown side, x. ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा. b and c would be 7 and 6. ठीक है, आप इसको स्वैप कर सकते हैं, अगर आपको चाहते हैं तो आप स्वैप कर लें. आप इसको b बना दें, इसको c बना दें, या इसको b बना दें, इसको c बना दें. ठीक है, तो this would become 7 square plus 6 square minus 2 into 7 into 6. And now what is cos a? That a is the angle which is opposite to the unknown side. ठीक है, this would be 50 degrees. So I have cos 50 degrees as my angle. तो मैं क्या करूँगा? In order to get the value of x, I'll take under root on all of it. तो मेरे पास हो जाएगा, sorry, 7 square plus 6 square minus 2 into 7 into 6 into cos of 50 degrees. Okay, तो हो जाएगा 7 square plus 6 square minus 2 into 7 into 6 into cos of 50 degrees. And my answer is coming out as 5.57. Okay, 5.57 centimeters is the value of x. Let's take another question. यहाँ पे I have to find this side D. ठीक है, इस साइड के ऑपोजिट एंगल मुझे पता है. ठीक है, इस एंगल की दो एडजेसेंट साइड्स मुझे पता है. ठीक है, आई कैन अप्लाई द cos rule टू फाइंड द साइड D. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे क्या निकालना था? मुझे साइड D निकालनी थी. ठीक है, आई नो द एंगल ऑपोजिट टू इट, और उस ऑपोजिट एंगल की दो एडजेसेंट साइड मुझे पता है, तो मैं cos rule लगा सकता हूँ. तो मेरे पास अगैन cos rule की साइड निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? a is my unknown side, so I'll write d square. b and c are the adjacent sides of the angle which is opposite to my unknown side. ठीक है, जो मेरी unknown side थी वो d थी, उसके opposite angle was 75.
उसकी एडजेसेंट साइड मेरे पास 3 और 5 है, ठीक है, तो वो मेरे पास ये 3 हो जाएगी, इसको b ले लूंगा, इसको c ले लूंगा, ठीक है। तो दिस वुड बिकम 3 स्क्वायर्ड प्लस 5 स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉज, कॉज एंगल क्या आएगा इसमें, एंगल वो आएगा विच इज ऑपोजिट टू माई अननोन साइड विच इज 75 डिग्रीज, ठीक है। तो अब b निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट ले लेंगे पूरे पे। I'm going to get 3 squared plus 5 squared minus 2 into 3 into 5 into cos 75 degrees. And what is the answer for that? Let's check. 5.12 centimeters. ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग साइड निकाल सकते हैं ना, हम लोग cos रूल से एंगल भी निकाल सकते हैं। So let's try and find out the angle by using the cos rule. ठीक है। Over here, I have an unknown angle f. ठीक है। I know all the sides of the triangle. ठीक है, if I know all the sides of a triangle, I can make use of the cos rule to find the unknown angle f. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos a, I have to use the formula cos a equals to b square plus c square minus a square over 2bc. ठीक है, now what are b, c, a, ठीक है, b and c are my adjacent sides, ठीक है, of the unknown angle. B and C are the adjacent sides of the unknown angle. A is the side which is opposite to my unknown angle, ठीक है, which would be 17. So I'll get cos A. What is A? A is my unknown angle, which is f. So I'll get side f equals to b square plus c square. B would be 5 and c would be 13. So 5 squared plus 13 squared minus a squared would be 17 squared upon 2bc. So b and c हमें पता है 5 and 13. ओके, तो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज आई कैन जस्ट टेक द कॉज इनवर्स, ठीक है, पूरा दोबारा कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप कॉज इनवर्स डायरेक्टली ले लें और आंसर निकाल लें, ठीक है। 2 into 5 into 13, लेट्स फाइंड क्या क्या आंसर आ रहा है। 5 squared plus 13 squared minus 17 squared over 2 into 5 into 13, getting the angle as 136.95, ठीक है, so I can write that as 137.0 degrees. सही है, अब थोड़े से और सवाल कर लेते हैं। Okay, over here I have to find this length AC, ठीक है। If I have to find the length AC, I need to know the angle opposite to it, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एंगल नहीं है, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए आई विल बी एबल टू अप्लाई द कॉस रूल। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो अननोन साइड है उसकी ऑपोजिट एंगल नोन हो जाएगा, ठीक है, और उस ऑपोजिट एंगल की दो एडजेसेंट साइड मुझे पता है, तो आई विल बी एबल टू अप्लाई द कॉस रूल, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एंगल आई नो दैट दिस बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सी डी बी इज अ स्ट्रेट लाइन and angles on a straight line equals to 180 degrees. So I'll be able to find this angle x over here, ठीक है, मैं इस एंगल को निकाल सकता हूँ, या इसको x ले लेते हैं, तो I'll get x plus 60 equals to 180 degrees. So I'll get the value of x as 120 degrees because 60 will get subtracted on the other side. I'm going to get the value of x as 120. So I got the value of x as 120 degrees. So yeah, अब I have to find this side AC. तो AC निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? This is the opposite side, ठीक है? AC निकालनी, sorry, cos rule लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? A square equals to b square plus c square minus 2bc cos a. Okay, so AC is my unknown side, so I'll write AC over here, AC squared. B and C would be the adjacent sides of my angle, which is opposite to AC. Okay, so this would be 65 and 84. So B would be 65 and C would be 84 minus 2 into 65 into 84 into cos A. What would be A is the angle opposite to my unknown side, which is 120 degrees. So I can find the value of AC by taking square root on both the sides. So I'm going to get square root 65 squared plus 84 squared minus 2 into 65 into 84 into cos 120. And my answer is coming out as 129.4 centimeters. Yes. Centimeters. Okay. इस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें और भी थी, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग cos rule, so I have skipped those questions, ठीक है, और मैंने सिर्फ वो वाला क्वेश्चन
निकाला जो कि relevant था to the cos rule. There's another interesting question in which I have to find the value of x. ठीक है भाई. And this question is a little different. अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि यार आपके पास जो given angle है उसकी opposite side भी known है, ठीक है? And this angle is also known. So how would I be able to find x and 2x? Okay, पहले सोचते हैं. Will I be able to apply the sine rule over here? ठीक है? Sine rule, if you haven't studied sine rule, you can watch the previous video to understand sine rule, and then you can come back and attempt this question. Okay. तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि इफ आई हैव टू फाइंड एन अननोन साइड आई शुड नो द एंगल ऑपोजिट टू इट, ठीक है? सो आई हैव दिस एज द अननोन साइड, आई डोंट नो द एंगल ऑपोजिट टू इट, आई वोंट बी एबल टू अप्लाई द साइन रूल. तो मेरे पास ना इसके ऑपोजिट एंगल मुझे पता है ना इसका ऑपोजिट एंगल मुझे पता है, सो आई वोंट बी एबल टू अप्लाई द साइन रूल ओवर हियर, ठीक है? कॉस रूल क्यों लगा सकते हैं? कॉस रूल इस वजह से लगा सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑल ऑफ दीज साइड्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है? दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, दिस इज द प्रॉपर वैल्यू. लेकिन ये वाली दो साइड्स हैं मेरे पास, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है. आई हैव द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, एंड हैव द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल, ठीक है? तो आई विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, ठीक है? और मेरे पास जो सारी चीजें आएंगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएंगी. पहले क्या, मुझे अगर मेरे साइड का फॉर्मूला था ना, तो मेरे पास साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी जो कि इस नोन एंगल के ऑपोजिट है, ठीक है? तो माय साइड वुड बी 21 स्क्वायर्ड. व्हाट वुड बी बी एंड सी? बी एंड सी वुड बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल, would be x squared plus 2x whole squared minus 2 into x into 2x cos. What would be the angle? The angle would be the which is opposite to this side 21, ठीक है? So I'll get the angle as 120 degrees. तो मेरे पास हो जाएगा 21 squared is 441. X squared plus 2x whole squared would be 2 squared into x squared. So 2 squared is 4 x squared, and this would become 2 into 2 is 4, x into x is x squared, so I'll get minus 4x squared. The value of cos 120 is minus 1 upon 2, or minus 1 upon 2 ले लेते हैं, ठीक है? So I can cancel out this 2 with this 4, okay? Minus and minus will become plus, ठीक है? I get x squared plus 4x squared minus minus plus 2x squared equals to 441. X squared plus 4x squared plus 2x squared would be 7x squared. 2 plus 4 is 6. 6 plus 1 is 7. So I'll get 7x squared equals to 441. I can divide 7 on the other side. So I'll get 441 divided by 7, which is equal to 63. I get x squared equals to 63. I get x equals to under root 63. I'll take under root on both the sides. So मेरे पास आ जाएगा x squared equals to under root 63. So the value of x comes out as 7.94 centimeters. Okay. I hope you understood this question. If you still have problems in understanding it, you can mention that in the comments below. And that's it for the video. I'll still be uploading videos in which I'm going to discuss past year questions for sine rule and cos rule. Okay.